Hello everyone, and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a very important topic that is very much in the news, and it is about the census that is being conducted. Uh, like We'll start from 1st April, and I think you must be knowing that these things have been very much in the news. So we'll be discussing about the census, the past of the census, okay, and things with related to that. Okay, so let us begin. Am I audible, visible? Okay, so let us begin. Okay. Now, am I audible, visible? Is everything fine? Is the slide visible? Yes. Good afternoon, everyone. वेलकम टू द क्लास. सेंसस काफी न्यूज में, तो हम लोग इससे रिलेटेड चीजें आज डिस्कस करेंगे. ओके. फाइन. So census is very much in the news. Okay. Can anyone tell me what is census? क्या होता है census? को बता सकता है? What is the census? Anyone? A few lines. So this is actually a sort of an exercise, a sort of a survey that is conducted at at India level, country pan India level, where actually to collect the data with regards to population, and population, like how much population is there, how much percentage of scheduled caste, scheduled tribe are there, or nowadays we are having caste census also. Okay, these things you should be knowing. Basically collection of data of the population. Yes, population data collection, right? Sure, yes, Sarah, you are right. Huh? Priyam Agarwal, yes, counting of people in the country. Huh? And not only counting of people, their literacy rate, the gender ratio, the child sex ratio, and things like that. Huh? Which state is having maximum population, which state is having maximum population density. Huh? So data with regards to that, which is generally calculated after every 10 years. Okay. But before moving on, I'm sure have you read these types of article talking about removal of chief election commissioner? And we have seen terms like impeachment written, but impeachment is only for president of India, technically. Okay. And the word removal is mentioned for the Supreme Court judge removal. Same is the process for chief election commissioner. So ideally, the word that should be used is removal of chief election commissioner, and this has been very much in the news, Hannah. And there have been removal motion initiated by the opposition parties. Okay, that was very much in the news, and we have taken a class with regards to that. So first of all, please subscribe to our channel, go to the live section, and when you scroll down, you will find this video. And CEC, chief election commissioner, be removed. I've taken an article. I've discussed this last week, I think last week, 7-8 days back. And this is very, very important. I would suggest. Please watch it. Hannah. Star market. Okay. Now let us begin with the census. The question is the first census in India. So we'll be discussing with by the help of question and answer. The first census in India happened in which year? You have to tell me. Some of the things we have already discussed in the past, but now we can use it again. The right answer is first census happened in the year 1872. Yes. Yes, MNS Studio. Yes, you are right. Shore Kapila. Ridhibesh, you are right. A is the right answer to this question. Okay. Now, the question is AP Reorganization Act. थोड़ा सा पढ़ लेना. Yes, Ridhibesh. They're talking about the capital city, है ना, being declared Andhra Pradesh. तो उसको थोड़ा पढ़ लेना. Yes. Who was the Governor General of India at that time when in 1872 first census happened? Yes, Ridhibesh, you're right. The right answer is Lord Mayo. First census जब हुआ था 1872 में, the Governor General at that time was Lord Mayo. And since we are talking about Governor General and Viceroys, we have taken a class and a modern Indian history class लिया. We have actually a separate playlist for that. You can watch it, where we have discussed in detail.
So what I would suggest is, है ना, and the decennial means every 10 years, है ना, the census happens. है ना, 1872 under Lord Mayo, है ना, the first complete census was taken in 1872. ठीक है. And when you go to our playlist, this is actually about modern Indian history. You can click on view full playlist and you can watch the modern Indian history topic. Here we are talking about the governor generals. You can watch it. This is also very important. We have seen questions on governor generals and viceroys. ठीक है, इसमें देख सकते हो. We have taken modern Indian history classes. These are very helpful for MH set exam also, the upcoming MH set exam. है ना, जिसमें ये पूछते हैं all famous battles, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से. These two are very important for MH set. है ना. Let's move on. Now we are talking about first synchronous census happening. The first synchronous census happened in India in which year? Can we have classes on freedom movements? इसमें है freedom movements पर, इसी में देखो, इसी प्लेलिस्ट में तो है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, नॉन क्रिप्स मिशन, है ना, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड आल्सो बी देयर. इसी में होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है ना, इट्स मिसिंग बट आई विल शो यू. ठीक है ना, नॉन कॉपरेशन गांधी जी सत्याग्रह, आई थिंक सम ऑफ द क्लासेस आर मिसिंग बट आई विल गेट इट एडेड, है ना. Okay. First synchronous census in India happened in the year 1881. Synchronous means using the same data, using same parameters लेकर के at one time conducted in entire India, है ना, एक बार में पूरा. So 1881 में, so the first synchronous census happened, and it was done by W.C. Plowden was actually the census commissioner at that time, and it was done in 1881, है ना. 1872 वाला होता फ्रैगमेंटेड था, इन्हें कुछ कुछ हिस्सा में हुआ था, प्रॉपर्ली नहीं हुआ था. 1881 वाला फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस मींस इट हैपेंड इन एंटायर इंडिया विद वन पैरामीटर, है ना. द गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड रिपन. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. नाउ द नेक्स्ट इज सेंसस इज डन अंडर द एजेस ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्केट. एंड दिस इज अ यूनियन लिस्ट. अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहां आता है ये? वेयर विल यू फाइंड सेंसस? People are saying option B. Yes, Riddhesh, you are right. MHA, Ministry of Home Affairs, not Ministry of Statistics. That is what I wanted to highlight. Yes, it is under union list. Okay, it is under union list conducted by Ministry of Home Affairs. Office of Registrar General and Census Commissioner comes under Home Ministry, not under Statistics Ministry. This is related with GDP estimation वगैरह के लिए सब काम आता है, MOSP. But this census deals with is under Home Ministry and not Statistics Ministry. ठीक है. So अब देख सकते हो, जैसे ये 2011 लास्ट सेंसस ना 15 टाइम्स वी हैव सीन. लास्ट 2011 में हुआ था 15 सेंसस, है ना. So first हुआ था 1872 में, but first synchronous census started happening in 1881, and it is done under Registrar General Census Commissioner under Ministry of Home Affairs. And who is the Home Minister of India? Home Minister कौन है? Mr. Amit Shah is the Home Minister of India, na? Yes, that is what you should be knowing. Registrar General and Census Commissioner founded in 1961. Ministry of Home Affairs. Okay. And who is the right now Secretary Registrar General and Census Commissioner of India? Mr. Mrityunjay Kumar Narayan, IAS officer. Okay, why we are discussing it? Because अभी मैंने एक आर्टिकल देखा था. Earlier census data to be available in 2027. First phase to start from April 1. RGI says. ये न्यूज देखा है किसी ने? Have you seen that? Anyone read that news? As the population census 2027 is being conducted digitally, more census data will be published in the year 2027.
Mrityunjay Kumar Narayan, Registrar General Census Commissioner, said, है ना, he added that it will be caste enumeration, caste data census भी होगा, वो second phase में होगा, है ना. So those phases में it is being conducted in 2 phases. We'll be talking about that, है ना. So census officials ने कहा है कि as compared to 2011 census, which happened, the last census that happened in 2011, there has been a decrease in the number of villages by 1,000. 1,000 villages कम हो गए इंडिया में, है ना. So it means the cities are increasing, the urban population is increasing, and the rural population is declining. So census 2011 के हिसाब से we had 31.16% population in urban areas. So now after this census, I think it will increase from 30 to maybe up to 35 or 40. It बढ़ जाएगा. So 31% people are actually in urban areas and 69% people were in rural areas according to 2011 census. But I think this will increase. Like the urban areas expansion will increase more than 31. Say maybe it will go to 35 or 40. So this we'll get to know after the result or after the census data will come. Okay. Mr. Narayan said that West Bengal is the only state that has not notified the census process yet, है ना? And the deliberations are still happening, है ना? This would be the first digital census. पहला digital census होगा. First to enumerate caste and first to allow self-enumeration option to responders. Yes, last caste census whose data is with us. कब का है? Whose data is with us is of 1931. Very important. Last census का data नहीं याद रखना, थोड़ा बहुत मैं आपको बताते जाऊंगा. ठीक है, little bit I'll discuss about last year census, है ना. Census Act 1948, census are confidential and respondents are answered to the best of their knowledge. Only aggregate data is released and individuals data cannot be shared. है ना, ओवरऑल जोड़ करके डेटा निकाला था 120 करोड़ पॉपुलेशन, 140 करोड़ पॉपुलेशन. इंडिविजुअल डेटा जो लोग आप देते हैं वो नहीं शेयर किया सकता है कि एक पर्टिकुलर आदमी के घर में कितने आदमी रहते हैं, है ना, और कितने फ्रिज है, कितना एसी है, कितना मशीन, वो रिलीज नहीं किया था. Although they can ask it when the census is being conducted, they'll ask such questions, है ना, whether you have TV in your house, whether you have AC in your house or fridge in your house. But this data is not released in the public. Aggregate data is released. Let's say they will say how much population is there in, let's say, the state of Maharashtra. How much population is there? How much female child is literate, male child is literate. Overall data निकाल के देते. Personal data नहीं. हाँ, 2011 also we have seen census, but the caste census data was not released. Yes, you're right. हाँ. And that is what is being talked about. And he said census data is beyond the scope of investigation. Nobody can file a petition saying that, look, this you need to investigate the census. This is not correct or something like that. है ना? Census data cannot be used to provide reservation benefits to any individual and does not come under RTI Act. This is very important. And the data cannot be shared even with the judiciary. जो public में data डाला जाए वही सबको मिलेगा. ऐसा नहीं कि there is something personal that can be shared if someone files a petition in the court that we need some extra data. No, that is of course the prerequisite or prerogative, I would say, of census, है ना? That is what you should know. Census officials, I would say. ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है एक्स्ट्रा चीज कुछ मांग ले कि आप इतना डेटा नहीं ये भी रिलीज करो, है ना? That will be released by only by census commissioner and the registrar general and all. ठीक है. 16 languages में it is being conducted. सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल होगा, वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो एंड यू कैन राइट, है ना. अप्रैल 1 से 15 तक होगा फॉर रेजिडेंट्स बिलोंगिंग टू अंडमान निकोबार, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, ओडिशा, लक्षद्वीप, मिजोरम एंड एनडीएमसी एंड दिल्ली कैंटोनमेंट एरियाज. फॉर देम इज 1 April to 15 April. यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड रजिस्टर. सेल्फ एनुमरेशन ऑप्शन विल बी अवेलेबल. सेल्फ एनुमरेशन में खुद से जाके वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हो ना. And that will be the first phase of census will be house listing operations. I'll tell you what is house listing operations. है ना. The window for the first phase is from 1 April to 30th September for all states. है ना. अगर सेल्फ एनुमरेट करना ही नहीं अपने वेबसाइट पे डालना तो 1 से 15 अप्रैल के बीच. सेकंड फेज होगा पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा, where each individual's information is taken, जैसे religion, caste, etc. That will be conducted हाँ till February 2027 के आसपास तक होगा, है ना. Except for Ladakh and Jammu and Kashmir, Himachal, etc. Where this will be completed by 30th September. तो सेकंड फेज जो है 30th September ही तक हो जाएगा लद्दाख में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में. वैसे अदर स्टेट्स के लिए फरवरी 2027 तक चलेगा. So basically digital literacy becomes very important, and that's why then only of course it is possible. So they are saying that since digital literacy has increased, that is why we are encouraging self enumeration. Means you can open the website or app and register about yourself, है ना. You can use mobile phones, laptops, etc. अपने बारे में लिख सकते हो कि मेरे घर में जो भी पूछेंगे सवाल, you can answer it accordingly, whatever they'll be asking, है ना.
सो पहले जो पेपर पे होता था तो ऑफकोर्स टाइम बहुत लगता था. नहीं, टाइम नहीं पूछेंगे, फेस वाइज का टाइम नहीं पूछेंगे, जस्ट आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट. थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह पूछेंगे, यही से पूछेंगे सेंसस कितना हुआ. तो दिस ईयर इज दिस टाइम द मोस्ट लेटेस्ट सेंसस. लास्ट ईयर जो हुआ था 2011 में हुआ था, 15 सेंसस था. सो दिस ईयर जो 2027 2026 में हो रहा है या 26 27 में हो रहा है, उसको हम कहेंगे 16 सेंसस. is the right answer. Now, since we are talking about census and the history of census, the most important question that comes to our mind is with regards to which of the following is known as Great Dividing Year. Anyone? And why? Reason ही बताना है, ठीक है ना? Yes, 1921. But what happened? देखो होता क्या है, tell you. जैसे when we started doing census, proper synchronous census 1881 से हुआ. So 1901 है ना, 1891, 1911, 1921, 1931, ऐसे like that. Okay. So what happened was the population was always rising, but 1921 के बाद 1911 के बाद we have seen here. Let me write it clearly. तो यहां से पॉपुलेशन राइज होता रहा और 1911 के बाद वी हैव सीन डिक्लाइन. फिर 1921 के बाद फिर राइज हुआ, ऐसा लाइक दिस, ठीक है. स्पेनिश फ्लू, वेरी गुड. हाँ, सो व्हाट हैपेंड वाज, देखो जैसे आपने कोविड-19 में देखा 2019 में वी हैव सीन कोविड, सो समथिंग सिमिलर टू दैट 100 years back in 1919 वी हैव सीन के आसपास. सो समवेयर हियर वी हैव सीन स्पेनिश फ्लू. स्पेनिश फ्लू, ओके. और उसकी वजह से पॉपुलेशन गिरी थी 1911 से 1921. सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ग्रेट डिवाइडिंग ईयर. And since then we have seen the increase in population as compared to last year. Okay, that is what you should be knowing. C is the right answer to this question. This year 1921 is regarded as defining year for Indian demography. It is also known as the year of great divide. Okay, after 1921 India's population growth has remained consistent. That is what you should be knowing. Next is, according to the census 2011, which of the following group of states occupied top 3 places with respect to literacy? So this is last year's census, but I just wanted to know, like, can you have rough idea with regards to last census? कुछ rough idea बता सकते हो? Yes, the answer actually was Lakshadweep, Mizoram and Kerala. Kerala, Lakshadweep and Mizoram. ठीक है, आपको पता होगा केरला जनरली टॉप पर रहता है, तो केरला, लक्षद्वीप एंड मिजोरम. सो इज द राइट आंसर. पाथ, यू वर राइट. हाँ, ओके. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? आई एम जस्ट वांटेड टू नो रफ आइडिया, आपको पता है कि नहीं लास्ट ईयर, सो लास्ट टाइम का सेंसस डेटा के हिसाब से लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया. यस चेतन, राइट. 74% इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना. 74.04% है, ठीक है. पॉपुलेशन कहता थी 121 करोड़ थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है. ओके, सो ए इज द राइट आंसर. फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब हुआ था? Yes, Chetan, sure, yeah. Dipesh, you are right. B is the right answer. 1951 is the right answer to this. Yes, Parth, Ansh, you are right. हाँ, 1950, of course, 1947 के बाद पहला कब होगा? 1951 में. Yes, B is the right answer. Which state is having maximum population density according to 2011 population? अगर maximum population पूछा जाए
So the answer would be UP, almost around 19-20 crore, है ना? A maximum population density पूछा जाए, then what should be the answer? The answer is Bihar, 1186 person per kilometer square. ठीक है. ओके, मैक्सिमम टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 सेंसस की बात कर रहा हूँ अभी. लाइक आई मीन इट मस्ट हैव इंक्रीज, बट दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस. पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर हाउ मच पॉपुलेशन इज देयर. डेंसिटी घनी आबादी. सो द आंसर इज बिहार, है ना? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट. हाईएस्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स, है ना? अब देख सकते हो यहाँ पर स्टेट्स के मामले में यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सबसे ज्यादा है, अगर यूनियन टेरिटरी को भी कंसिडर कर लोगे तो. ठीक है, तो दिल्ली विल बी द हाईएस्ट. इससे कहीं ज्यादा है, बिहार से ज्यादा है. बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग स्टेट्स, तो आप देखो यहाँ पर रेड ज्यादा है ना, डार्क रेड है. बंगाल में भी है, बट द हाईएस्ट इज बिहार population density wise. Which state is having the highest percentage of scheduled tribe population according to 2011 census? Scheduled tribe population percentage wise. Let me see. I just wanted to have an idea about this. D is the right answer. Mizoram. Yes, Rohi Verma, you're right. D is the right answer. 95% Mizoram population जो है ना वो ट्राइबल ओरिजिन की. D. ठीक है. So that's what you should know. So state with highest population density Bihar, है ना, 1106 per kilometer square. We are talking about 2011 data, है ना? फिर इतना इससे ज्यादा नहीं जाना है. और इसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन इफ दे आर आस्किंग उत्तर प्रदेश. ठीक है, ठीक है. लिटरेसी हाईएस्ट लिटरेसी केरला, लोएस्ट लिटरेसी बिहार. तो ये सब पता होना चाहिए. ठीक है. और डेटा ओवरऑल लिटरेसी 74%, जिसमें मेल 82% है, फीमेल 65%. आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया. सब नहीं रटना, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए. जैसे ये पता होना चाहिए बिहार का, उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. यू शुड हैव अ रफ आइडिया, है ना? और इस सब पे इतना डिटेल नहीं जाना है. वी आर नॉट गोइंग वेरी मच इन डिटेल. एक का रिड्यूस हुआ था, मालूम है? As compared to 2001, in 2011 we have seen reduction in population of one state. So the answer is Nagaland. That will not be updated unless until the 2027 data will come. वो 2011 का सब डेटा दिखा रहा हूं. After that we have not seen any census. So once this new census of 2026 2027 will complete, then only we will be having the data, new data. So ये सब लास्ट टाइम का नहीं, 2011 का डेटा मैं बता रहा हूं, है ना? So let's talk something about census 2027. एक तो मैंने बता दिया, it will be conducted by registrar general, census commissioner under home ministry. This has to be very crystal clear, not under ministry of statistics. एकदम याद होना चाहिए. Mr. Mrityunjay Kumar Narayanan is the registrar general and census commissioner of India, and it will be conducted in 2 phases. First phase to start from 1st April, है ना? So the second phase होगा, that second phase will be talking about will be enumerating caste data also. And we have taken a separate class. देखो caste census की बात हो रही थी for the past 1 or 2 years. Opposition parties like Mr. Rahul Gandhi and from RJD, what is the name? Mr. Tejasvi Yadav, they were asking for caste census. So initially the government was not willing to agree with that, but later on, I think last year, government agreed to do caste census also. So in caste census, what exactly is the idea behind caste census? When the last caste census happened and when the last caste census data is available, what are the facts with regards to that? Please watch this class. Now this class becomes very important because census is very much in the news. तो ये वाली class जरूर देख लीजिएगा. And what is the concept behind delimitation? Because after every census, the delimitation exercise is conducted. So what is the concept behind delimitation? I have told you in this class. Please watch it. This is very important. Now, ठीक है? कि कास्ट सेंसस क्या होता है, delimitation exercise क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना? The next is according to the data shared by census official compared to 2011 census, there has been a decrease in the number of village, है ना? ये तो आप लोगों को बता दिया, ये सब हो गया. ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया 10 में. As per Census Act, this we have done it, है ना? 16 languages also. तो आप जो है ना 16 languages में अपना सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हैं, नॉट ओनली इन इंग्लिश और हिंदी, बट इन 16 ओवरऑल लैंग्वेज, है ना? वैसे आई एम आस्किंग हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर मेंशन इन 8 शेड्यूल? जस्ट वांटेड टू नो.
हाँ 22. Yes, very good. 22 language. So first window, first phase होगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर, एंड सेकंड फेज टिल फर्स्ट फरवरी 2027. ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फेज में क्या क्या होगा. डिजिटल है ना, डिजिटल सेंसस होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, है ना. यू कैन यूज ऐप, मोबाइल ऐप होगा उसका, सो यू कैन सर्च इट, सेंसस का ऐप होगा, या वेब पोर्टल्स होगा, उसके थ्रू यू कैन रजिस्टर इट, है ना. जीआईएस टैग डिजिटल डेटा भी होगा. जीआईएस टैग समझते हो? जीआईएस इसको कहते हैं जियो टैगिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो, गूगल मैप पे आईटी दिल्ली, तो ऐसा जियो टैग बना जाता है ना, इसको कहते हैं जियो टैगिंग, है ना. ओके, सो मोबाइल ऐप के थ्रू यू कैन सर्च डू इट, है ना. तो आपका आपके हाउस में जियो टैगिंग वगैरह हो जाएगी, एटसेट्रा एंड ऑल, है ना. मोर एक्यूरेट डेटा मैप एनालिसिस वगैरह, डिजिटल सब कुछ हो जा रहा है ना. सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज. अच्छा, एक चीज में दिखाते हैं, इसमें 2 फेज लिखा होगा, लेट मी चेक. हाँ, फर्स्ट फेज होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगा. फ्रॉम 1 अप्रैल टू सितंबर 2026 कवर्स हाउसिंग कंडीशन, एमिनिटीज एंड एसेट्स. घर से रिलेटेड चीजें पूछा जाएगा कि आप अपने मकान में रहते हो, किराए का मकान है, कितने लोग हैं, सिलेंडर है, गैस है, ये सब एटसेट्रा. हाउसेस में वेदर यू हैव फ्रिज और नॉट, एसी है कि नहीं, पंखा है, टीवी है, एटसेट्रा नॉट. ठीक है, सो क्या क्या पूछा जाएगा हाउस लिस्टिंग सर्वे में? हियर इट इज. बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर, मटेरियल ऑफ द फ्लोर, कि आपका घर कैसा है, पक्का हाउस है कि कच्चा हाउस है, वेदर सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड, है ना. A certain condition, household number, total number of persons living in that household, घर में कितने लोग रहते हैं, जेंडर कौन कितने मेल से कितने फीमेल है, वेदर दे बिलोंग टू एससी एसटी और अदर कास्ट, है ना. नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, मैरिड कपल्स कितने मैरिड लोग हैं, कितने अनमैरिड लोग हैं, आप पानी कहाँ से पीते हो, साफ सुथरा पीते हो, आरओ का पानी पीते हो, डायरेक्ट पीते हो, है ना. मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, बिजली कहाँ से लाते हो, इलेक्ट्रिसिटी वाला है कि आप अभी भी लाइक यू आर स्टिल यूजिंग लैम्प, और एक्सेस टू लैट्रिन, वॉशरूम है कि नहीं, ओपन डेफिकेशन तो नहीं है, आपके पास प्रॉपर वर्किंग टॉयलेट है कि नहीं, है ना. कि टाइप ऑफ लैट्रिन किस तरह का लैट्रिन है, सीमेंटेड है कि नहीं, या वही प्रीवियस ओल्ड स्टाइल है. ठीक है, आपके घर में रेडियो, अब ये इसका तो आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो ट्रांजिस्टर, तो आज कहाँ कोई लोग रखते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट दे शुड बी आस्किंग कि वेदर यू कैन यूज चैट जीपीटी और नॉट. ये पूछना चाहिए था. क्या आपको एआई यूज करने आता है कि नहीं, है ना. टेलीविजन, यस. एक्सेस टू इंटरनेट, यस. whether you have internet in your house, आपके घर में इंटरनेट है कि नहीं, because nowadays it has become very important. लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, yes, now they're talking about smartphone also. क्या आपके घर में स्मार्टफोन है कि नहीं, बाइसिकल है कि नहीं, कार, जीप, वैन है कि नहीं, मोबाइल नंबर है कि नहीं, है ना. एलपीजी कनेक्शन है कि अभी भी आप कोयला का गैस यूज कर रहे हो. सो दीज आर द थिंग्स अंडर हाउस लिस्टिंग, फर्स्ट फेज. ठीक है. सेकेंड फेज में पॉपुलेशन एनुमरेशन डेटा, इसमें कास्ट सेंसस होगा, कास्ट का डेटा एंड ऑल. तो लेट्स सी जो सेकंड फेज में होगा वो ये होगा. जेंडर पूछेंगे सबका, एज पूछेंगे, मैरिटल स्टेटस, चाइल्ड फॉर फीमेल, रिलीजन पूछेंगे, कास्ट वगैरह. आप देखो एससी एसटी के अलावा भी आ गया. 2011 बस सेंसस एससी एसटी था, अब नाउ सेंसस इज अ कास्ट सेंसस. इट विल इंक्लूड ईच एंड एवरी कास्ट. आपका साफ कास्ट पूछा जाएगा कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, है ना. लैंग्वेज, मदर टंग एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, आपको कितनी लैंग्वेज आती है, आपकी कौन सी मदर टंग है, विच इज योर मदर टंग. एंड एजुकेशन, like let's say if there are 5 people in your family, how many of you are actually educated, some is class 9, some is at class 12, some is graduate, है ना. physical disability भी तो नहीं किसी को. this is also very important because the government will make policies accordingly, है ना. कि फिजिकल डिसेबिलिटी कितने लोगों को, उस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन, ऐसा तो लाइक माइग्रेशन द सेंस, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर लिविंग इन, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर बिलोंग टू बिहार, है ना, एंड वन ऑफ योर फैमिली मेंबर इज एक्चुअली डूइंग जॉब लेट्स से इन महाराष्ट्र, इन मुंबई. सो दैट दे विल आस्क कि आप माइग्रेट किए हो कि नहीं आपके घर से. So they should also check if women have access to sanitary pads. Yes, Radibesh, you are right. I think I need to check it. They have not mentioned. You are absolutely correct. ये भी पूछा जाना चाहिए whether the women are actually getting access to free or affordable sanitary pads or not. Yes, because this will help us get to know the idea about this, है ना, with regards to women empowerment, because that's also very important. So especially in schools, because the sanitary pads they get in, especially in government schools, they are being provided for, especially for poor girl child, है ना. So वो सब भी पूछा जाना चाहिए. Yes, you are right. जैसे मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, ये सब तो लिख रहे हैं. एक्सेस टू लैट्रिन लिखा है, टाइप ऑफ लैट्रिन लिखा हुआ है. बाथिंग फैसिलिटी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है. वेस्ट वाटर आउटलेट, हाँ कहाँ जा रहा है, प्रॉपर डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं. मेन फुल कुकिंग, ये इसका तो हमको मतलब 23 नंबर का आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. रेडियो ट्रांजिस्टर आज कौन रखते हैं? वेरी रेयर पीपल हैव रेडियो ट्रांजिस्टर्स. खैर, अब जो उन्होंने लिखा वही मैं बता रहा हूँ, व्हाटएवर दे हैव रिटन. मेन सीरियल कंज्यूम, क्या खाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. Because I'm sure you must be aware, there are some people who still actually in today's world they eat not proper food.
ठीक है, वो खाना नहीं खाते, खाना के अलावा बहुत और खराब चीज खाते, वी कैन नॉट स्पीक हियर, बट दैट इज व्हाट इन सम एरियाज वी हैव सीन, है ना। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, whether they are actually, because this is very important, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के लिए सब इंपॉर्टेंट है। डिसेंट खाना, डिसेंट रहने का, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। तो ये हो गया, है ना। सेंसस 2027 सेंसस विल बी 16 सेंसस, यही पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट कास्ट सेंसस हुज डेटा इज विद अस इज 1931, ये मैंने कास्ट सेंसस वाले डेटा में बताया हुआ था, है ना। वैसे यू कैन रीड फर्दर अबाउट इट। डिलिमिटेशन के बारे में मैंने वी हैव टेकन दिस क्लास, यहाँ पे ये वाली क्लास में, कहाँ चला गया वो, हाँ दिस वन प्लीज वॉच इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये हो गया, वी आर डन विद दिस, है ना। ई सेंसस वगैरह, ई सेंसस कह सकते हैं तरह से, नॉट इज वी आर हैविंग ई सेंसस बिकॉज दिस इज अ डिजिटल वन, है ना। कैबिनेट अप्रूव स्कीम फॉर कंडक्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2027, 2027 सेंसस, इसको 2027 का सेंसस कहा जा रहा है, ठीक है। यू कैन रीड अबाउट इट। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सर्वे, जो सेंसस फर्स्ट फेज होगा, है ना, लाइक दिस, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। ओके, है ना। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, है ना। तो इसमें कम्युनिटीज, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में पॉपुलेशन, रिलीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंग्वेज, लिटरेसी, एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन, फर्टिलिटी इज आल्सो देयर, लाइक हाउ मच चिल्ड्रन विल बी हैविंग, है ना। तो इसमें फर्टिलिटी तो नहीं लिखे हैं, बट ओके आई गॉट इट। वो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, उसी से पता लगा लेंगे। फर्टिलिटी मींस लाइक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल गेट टू नो दैट टोटल फर्टिलिटी रेट on an average a woman is having how many child in her entire life, है ना। So fertility they also calculate in the sense कि when they'll ask you about the number of population in your family, they'll ask you about the relation की father कितने, mother बच्चे कितने हैं, तो उससे हम लोग अंदाजा लगा लेंगे ना। fertility also, that is what you should be knowing। तो ये डेटा है, दोनों डेटा, just have an idea, और है ना, that is what you should be knowing about। The most important thing is, इसको थोड़ा सा आप चाहते हैं NPR पढ़ सकते हो, National Population Register, the government had initially proposed, but now it has been postponed, the concept of NPR। Please read something about few lines about National Population Register also, ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है वो यही है कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था। सो प्लीज राइट इट इन द कमेंट्स वंस द क्लास इज ओवर। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, है ना। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में होता है, हु इज द मिनिस्टर, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। और लास्ट कास्ट सेंसस whose data is with us, ये बताना है, ठीक है। Write in the comments। So we are stopping this class here. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone, thanks for watching।